Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Welcome to your chemistry lecture. So our today's topic is polar and non-polar covalent bonds. Open page number 64 of your books. Two non-metals share electrons unevenly because of electronegativity differences. Electrons are closer to one atom than the other. लेकिन जो दो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अनइवनली शेयर क्यों करते हैं? अनइवनली यानी कि जो इवन कहते हैं बराबर को. सो अनइवन क्या होगा? उसका ऑपोजिट, यानी कि ज़्यादा या कम क्यों होगा? क्योंकि जो एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंस होगी, सबकी अलग अलग होगी. दिस रिजल्ट्स ऑन पार्शली नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑन द एटम्स. पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड्स. पोलर बॉन्ड इज़ अनईक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब अनईक्वल शेयर होंगे इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ कॉल्ड पोलर बॉन्ड. और जब भी इक्वली इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे सो दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ कॉल्ड नॉन पोलर बॉन्ड. Examples of polar bond exist in water, ammonia, hydrochloric acid, etc. And examples of non-polar bond are in H2Cl2 and Br2, etc., which is hydrogen, chlorine, and bromine element. Now, if a covalent bond is formed between two similar atoms, यानी कि अगर दो same atoms के दरमियान में जो bond formation हो रही है, homo means same. The shared pair of electron is attracted both the atoms by both atoms equally, यानी कि दोनों एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल यानी बराबर की फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे. सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. These bonds are formed by equal sharing of electron pair between the two bonding atoms. This type of bond is called a pure covalent bond. For example, bond formation in H2 and Cl2. And if the covalent bond is formed between two different types of atoms, which is called heteroatoms. Hetero means different. So then the pair of electrons will not be attracted equally, यानी जो atoms हैं वो electrons को equally तौर पर attract नहीं करेंगे. So one of the atoms will attract the bond pair of electron more strongly than the other one, यानी कि जो एक atom है वो ज़्यादा strongly electrons को attract करेगा और जो दूसरा है वो कम force से attract करेगा. So this atom will be called as more electronegative. When there is difference of electronegativity between two covalently bonded atoms, there will be unequal attraction of the bond pair of electrons. So हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था हर एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिफरेंट होती है. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? the ability of an electron to attract a shared pair electron. So there will be unequal attraction for the bond pair of electron between such atoms. It will result in the formation of polar covalent bond. The difference between electronegativities of hydrogen and chlorine is 1. As the electronegativity of chlorine is more, it attracts the shared pair of electron towards itself with a greater force. क्योंकि अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा? ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. A partial negative charge is therefore created on chlorine and in turn a partial positive charge on hydrogen due to the electronegativity difference. यानी इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो क्या था? That was 1. So it creates polarity in the bond and is called polar covalent bond. So ऐसे जो bond formation होगी that is called polar covalent bond. As you can see, the electronegativity of hydrogen is 2.2 and chlorine is 3.2. So इन दोनों के दरमियान में जो electronegativity difference है that is 1. Now hydrogen पे positive charge है partial positive. So this is basically the sign of partial. And chlorine पे क्या charge है? Partial negative. So क्या होगा? Hydrogen अपना 1 electron क्या होगा? उसको क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देगा. द डेल्टा साइन इंडिकेट्स पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज. सो दिस साइन इज़ बेसिकली कॉल्ड डेल्टा विच रिप्रेजेंट पार्शियल. दैट इज़ डिवेलप. पार्शियल का मीन्स यानी कि कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट होना. दैट इज़ डिवेलप ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग और शेयर्ड पेयर और बॉन्डेड एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द डेल्टा साइन इंडिकेट्स पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज. The compounds resulting from polar covalent compounds are called polar covalent bonds are called polar compounds. जैसे ऐसे जो compounds जो polar covalent bond के result में बनेंगे उनको क्या कहेंगे? polar compounds. Examples क्या हैं इसकी? water, hydrogen fluoride which is HF and hydrogen chloride which is HCl. As you can see, H has partial positive and O has partial negative charge. Similarly जो fluorine है उसकी maximum होती है electronegativity. सो जो हाइड्रोजन होगा उसमें पार्शियल पॉजिटिव और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा. बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इट इज़ पॉसिबल टू प्रेडिक्ट वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयनिक और कोवेलेंट इन नेचर. यानी कि हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. अ बॉन्ड फॉर्म